myself from Depstar C. My ID number is 22DCE097. So let's talk about rapid application development and software engineering model. So first let me give you an overview of this model. First is with prototyping. Once we know the requirement of a client about the project, we will create one prototype for our model which will work in accordance with user environment. मतलब इसमें हमें यूजर की जरूरत चाहिए क्लाइंट की, क्योंकि क्लाइंट जैसे इन्वॉल्व होगा जो बोलेगा उसी प्रकार से हम प्रोटोटाइप क्रिएट करेंगे. Then next one is iterative development. Iterative development means पार्टली डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट पार्ट में होगा. जैसे दिस बोथ आर सिमिलर वंस. इंक्रीमेंटल रिलीज मतलब जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा वैसे वैसे हम हमारा रिलीज करते जाएंगे और डेवलपमेंट भी पार्शियल वे में ही होगा. और पार्ट में मतलब हियर यू कैन सी दैट हाउ दिस इटरेटिव डेवलपमेंट विल वर्क. And next one is parallel development. Parallel development means multiple teams will work together to perform a single task. So here I have drawn the figure for the team A. Similar, there will be team B, team C, and there will be n numbers of team. So this is the diagram of the how the rapid application development will work. First is business modeling. Business modeling मतलब उसके अंदर आएगा कि हमारे requirement क्या है क्लाइंट की और किस प्रकार से हम काम करेंगे, मतलब क्या क्या चाहिए उसे. And then comes data modeling. Data modeling means relationship between users and जो एडमिन है वो सब उसके मतलब कैसे काम होगा हमारे मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट इंस्टाग्राम में हमें डिफरेंट मतलब यूजर का हमें क्या दिखाना है कि उसको मैसेजिंग का फीचर दिखेगा, रील्स का फीचर दिखेगा. इन सब में एडमिन के टाइप से एडमिन के बाजू से क्या क्या है वो. एंड नेक्स्ट इज प्रोसेस मॉडलिंग. In process modeling means how the process will work. First the user will come, then he will have to first sign up, then only he will be allowed to sign in. Then he will be on top of the page, he will be shown the stories, next to it will be post, and when users swipe from right hand side then he will be getting the messages. So that's how everything will be processed. Then the flowchart will be created in process modeling. Application modeling. In application modeling, the whole application requirement will be gathered out. Let's say for example we require a cloud system, cloud facility, then we will have to research about Azure or Amazon Web Service for the same. And next, the last one is testing and turnover. So in testing and turnover, the final product will be tested out and it will be given to the client. So this is how the team will work collaboratively in parallel development. And similarly in this there will be team B, team C as we talked about. Now let's talk about the advantages of rapid application development. First one is this model is flexible for changes. मतलब इसमें जैसे जैसे चेंजिंग्स बीच में आते जाएंगे, हम बीच में चेंजेस करते जाएंगे. एंड सेकंड वन इज चेंजेस आर एडेप्टेबल. मतलब जो चेंजेस हमें मतलब थोड़ा पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट हैज बीन मेड देन उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं. थर्ड वन इज इट रिड्यूस द डेवलपमेंट टाइम. एज देयर विल बी मेनी टीम्स व्हिच विल बी वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट, द डेवलपमेंट टाइम विल बी reduced out. Fourth one is it increases the reusability of the features, and the fifth one is each phase in R&D brings highest priority functionality to the customer. As we goes down in this chart, you can see that projects get worked out in the proper way. Now let's talk about the disadvantages. First one is it required highly skilled designers. As we have parted out our project, we required the highly skilled designers for the same. Second one is all application is not compatible with R&D model. As we have given the example of Instagram, not every product will fit in this chart. So as every product has different requirements. Third is for smaller project, we can't use the R&D model as it is expensive one. Smaller product can't afford this system. And fourth one is on the high technical risk, it's not suitable. And fifth one is requirement of user involvement, as we would need to get the client on board, as we would be for making a prototype for which end user has required, and after every modeling we will be giving our part of the project to the client for the verification. So user involvement is the must. Now let's talk about applications. First is software prototyping. R&D models are great for creating prototype quickly, as they allow stakeholders to visualize the product early in the development cycle and facilitating feedback and adjust before the final product is built. Now let's talk about second, project with evolving
requirement. R&D model units suits projects where requirements are subject to frequent change. Means these models encourage flexibility and adaptability. They allow for ongoing changes in requirement, accommodating modification throughout the development process without significantly disrupting the workflow as we are going from up to down. The third is small to medium sized project. As we are going to use this model for the larger one, R&D models are effectively for small to medium sized projects. Due to their emphasis on speed and flexibility, R&D methodologies are particularly suitable for projects that don't require extensive documentation or complex hierarchical structure commonly found on larger projects. Thank you. Hello everyone, my name is Harshil Rovela, ID number 22DCE101, student from Charusat Depstar. So my model is spiral model. Spiral model was first introduced in 1986. It is mainly used for the risk management. It has been developed by in different 4 phases. Each phase begins with the design goal and ends with the client reviewing system. It is a combination of different models like waterfall model, prototype model, iterative models. That's why it is called as a meta model. So now we will be looking for the diagram of the spiral model. So first phase is objective determination and identify the alternative solutions. In this phase, we analyze the problem and identify the various solutions for that problem. Second phase is identify and resolve the risk. In this phase, we identify the risk in all the solutions and resolve that risk. In third phase, we develop a next version of a product. In this phase, we have been developing a prototype to the problem. Fourth phase is a review and plan for the next stage. In this phase, we have been reviewing the prototype and plan for the next stage. After the completion of a whole cycle, we review the product, and if the product have been not fulfilling all the requirements of the problem, then we are again repeating the whole cycle. That's why all loops have been created. Now we have been seeing the advantages of the spiral model. Advantages is first is risk handling. As in each cycle we identify the risk and resolve the risk. That's why it has been mainly it is a major advantage of this spiral model. Second is large projects. Large projects are implemented by this model. The second is flexible, as the new versions of the product has been developed in each cycle. That's why it is flexible. Third is customer satisfaction. After the completion of a cycle, the requirements are being checked by the customer also. Now we see the disadvantages. First is a complex. Second is expensive. Third is too much risk analysis, and fourth is a time taking. Now we see the applications. Applications is first is educational system. Aerospace and defense system has been implemented by this model. Telecommunication system and medical device development. And that's all for this model. Hello everyone, my name is Sumit. My ID number is 22DCE105 and I am a student of Depstar computer engineering, and today my topic is a prototype model in a software engineering. This is a very famous model in a software development process. इस प्रोसेस में क्या होता है कि कस्टमर होता है और हमारा क्लाइंट होता है वो इन्वॉल्व रहता है, और जब तक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं होती तब तक हम इस मॉडल को मॉडिफाई करते रहते हैं। इस मॉडल का जो पूरा डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार का होता है। सबसे पहले आता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद आएगा क्विक डिसीजन। डिसीजन के ऊपर से हम बनाएंगे प्रोटोटाइप, उसको कहते हैं बिल्ड प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप हम उसको दिखाएंगे अपने कस्टमर और क्लाइंट को। अब वो कस्टमर अपना इवोल्यूशन देगा उसमें। अगर उसमें कोई चेंजेस होगा तो हम रिफाइन रिक्वायरमेंट करेंगे, रिक्वायरमेंट को वापस गैदर करेंगे और उसके फिर ये प्रोसेस चलेगा। अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है तो कस्टमर के बाद जो से एक्सेप्टेशन आता है, मतलब एक्सेप्ट कर लेता है जो भी मॉडल है हमने सुधार के दिया है वो। फिर हम उसको करते हैं डिज़ाइन, फिर करते हैं इम्प्लीमेंटेशन मतलब कोडिंग वगैरह, फिर होता है उस मॉडल का टेस्टिंग, देन आफ्टर होता है मेंटेनेंस। अब इस मॉडल के कुछ एडवांटेज है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज में है रिड्यूस रिस्क ऑफ इनकरेक्टनेस, मतलब कस्टमर बार बार अपना रिव्यू देता रहता है, तब हमको पता चल जाता है कौन सा करेक्ट वाला ही करना है। इनकरेक्ट ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें। रेगुलर विजिबल प्रोग्रेस कस्टमर को अपडेट रहता है, मॉडल का जो अपडेट है वो आता रहता है, इसलिए इसकी वजह से विजिबल प्रोग्रेस रेगुलर रहता है। फिर आता है सपोर्ट अर्ली प्रोडक्ट मार्केटिंग। ये मॉडल जो है अर्ली मार्केटिंग को सपोर्ट करता है, मेंटेनेंस कॉस्ट को रिड्यूस करता है, क्योंकि बार बार हम कस्टमर को इन्वॉल्व कर रहे हैं इस सब प्रोसेस में, तो कस्टमर अपना रिव्यू देता रहता है, उसके हिसाब से हमारा कॉस्टिंग कम हो जाता है। दिस गुड वेयर रिक्वायरमेंट्स आर चेंजिंग, मतलब क्लाइंट की जब रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है उस
उस मॉडल में ये मेथड एप्लीकेबल है। देन डिसएडवांटेजेस आर, जो इस मॉडल में टूल्स यूज़ किए जाते हैं वो एक्सपेंसिव है, और ये जो पूरा प्रोसेस है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। देन आफ्टर डिफिकल्ट टू नो हाउ लॉन्ग प्रोजेक्ट विल लास्ट, मतलब प्रोजेक्ट कितना लंबा चलेगा उसका कुछ कह नहीं सकते पहले से, टाइमिंग नहीं बता सकते, मतलब लंबा चल जाता है। स्पेशल टूल्स एंड टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड, दिस इज आर डिसएडवांटेजेस एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ दिस मॉडल्स आर यूज्ड व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर नॉट क्लियर, मतलब रिक्वायरमेंट जो होती है क्लाइंट की जब क्लियर नहीं होती है तब इसका उपयोग किया जाता है। रिक्वायरमेंट्स आर चेंजिंग, जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बार बार चेंज होती रहती है, मतलब क्लाइंट को हमें वापस जाके पूछना पड़ता है, जिस प्रकार इधर आता है कस्टमर, हम उसको पूछते हैं, फिर उसमें अपडेट करते हैं, मतलब वो मॉडल इज़ अ वेरी गुड चॉइस टू डेमोन्स्ट्रेट द टेक्निकल एंड फिजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये सब इसकी एप्लीकेशंस है। दैट्स फॉर द प्रोटोटाइप मॉडल। थैंक यू। Hello everyone, my name is Dheeraj. I am student of Charusat University, Depstar from Department of Computer Engineering. Today we learn about Big Bang model and waterfall model. First, Big Bang model. In this model, developer does not follow any specific process. Development beginning with necessary fund, time, effort and resources as the form of input and give output or result as the software development, which may or may not be as per the customer requirement, because in this model the customer requirement is not defined. Therefore, this model is used for or ideal for small project like academic project, practical project, etc. In this model, one or two developer can work together as a team. Now, diagram of Big Bang model. Here we can see the model require time, effort, resources as input and give output as a software. It does not follow any process because the customer requirement does not specify. Also, it has very little planning. Now, therefore, usually this model is used for small project because the team is very small and planning is very little. Now, advantages: no planning required. The advantages of Big Bang model is it does not contain any planning. Second one, simple model. This model is very simple and easy to learn and access, also as well as it is simple to maintain. Now, flexible. This model is flexible to developer which can develop this model. Now, disadvantage of Big Bang model: high risk and uncertainty. This model has contain high risk because it does not contain any planning. Therefore, it can perform uncertainty in the output. Now, second one, not applied to large project. This project does not applicable for large project because the development team is very small. Third one, requirement are not clear, then cost is high. In this model, customer requirement does not specify. Therefore, the cost of output result means software development is very high. Now, application of Big Bang model. First, science communication. This model is very useful for science communication. Second one, satellite communication. This satellite communication engineer is use the background radiation and also use Big Bang model when they designing the system. Third one, cosmology and astrophysics. Astrophysics in studying the cosmic microwave background radiation, galaxy and large scale structure, the Big Bang model is very useful. Fourth one is space mission. This model is also useful for space mission to design an objective of space. Fifth one, high energy physics experiment. This model is used to study the particular physics and high energy event in particle acceleration contribute. Hello everyone, my name is Divyesh Sangani with ID number is 22DCE104. I am student from Depstar Charusat University. So today my topic is the software development model, and the first one is the agile model. So what is the agile model? Agile model is the application of values, principles and practice for software developing model that can be applied in the developing model and in the effective and very manner phases. And what is the phases of agile model? The first one is the requirement gathering. In this phase
मतलब जो आपने मॉडल बनाया है उसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट लगेगी उसको हम इसमें डालते हैं। डिजाइन एंड रिक्वायरमेंट मतलब आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कौन कौन सी डिजाइन लगेगी, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको हम इसमें डालेंगे। एंड देन कंस्ट्रक्शन वाले फेज में जो मॉडल है उसका कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। टेस्टिंग वाले फेज में जो मॉडल तैयार होगा उसमें उसकी क्वालिटी टेस्ट होगी। एंड डिप्लॉयमेंट मतलब जो आपका वर्क, जो मॉडल बनाने वाले आपके एम्प्लॉयमेंट और वर्कर है उसके आसपास का कौन सा एनवायरनमेंट होगा वो डिप्लॉयमेंट में आएगा। और फीडबैक आफ्टर द मॉडल इज रेडी व्हाट इज द फीडबैक, वो वाला क्वेश्चन फीडबैक में आएगा। एंड एडवांटेजेस ऑफ एजाइल मॉडल, सो क्वालिटी इंप्रूव होती है मॉडल की। एंड स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा बनती है एजाइल मॉडल। एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट एंड द कॉस्ट कंट्रोल मतलब आपका जो टाइम है वो भी कम होगा और जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। एंड दैट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एजाइल मॉडल। सो हाई चांसेस ऑफ प्रोडक्ट फेलियर मतलब आप प्रोडक्ट जो फेलियर है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। लार्ज टीम मतलब मेंबर्स की जब कैपेसिटी ज्यादा बड़ी होगी तो ये प्रोडक्ट के फेल होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ओनली एक्सपीरियंस मेंबर की ही जरूरत होती है, मतलब कोई नॉन एक्सपीरियंस मेंबर अगर इस प्रोडक्ट को बनाने जाएगा तो फेलियर के चांस बढ़ जाएंगे। And that are the applications of agile model. So first one is the adaptability to change, second is the customer collaboration मतलब में collaboration ज्यादा बढ़ता है कस्टमर के साथ। and then the implementation development and the efficiency मतलब प्रोडक्ट जो है उसकी efficiency ज्यादा होती है। और agile model जो है वो बाकी सब डेवलपमेंट मॉडल्स के से 28% ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल रहा है। और that is the diagram of agile model. So basically the first is the test and first is the design, पहले डिजाइन तैयार होगी फिर उसको डिप्लॉय करेंगे, फिर टेस्ट होगा, डेवलपमेंट होगा, फिर टेस्ट होगा, फिर डिप्लॉयमेंट होगा, उसके बाद जो रिव्यू होगा और रिक्वायरमेंट से फिर डिजाइन में प्रोसेस कंटिन्यू होगी। I am going to explain you VSAT model. So VSAT model is also known as verification and validation model because in this here you can see this is these all steps are for verification and these all steps are for validation। मतलब ये validation and verification दोनों पैरेलल काम होते हैं। और ये हम कह सकते हैं कि वाटरफॉल मॉडल का एक्सटेंशन वर्जन है। एंड टेस्टिंग इज एसोसिएटेड विथ एवरी फेज ऑफ लाइफ साइकिल मतलब हर फेज में मतलब जितना हमारा प्रोजेक्ट का एक एक यूनिट बनता जाता है या फिर एक एक पार्ट जितना बन जाता है वो सब टेस्ट होते जाते हैं वेरिफिकेशन स्टेज में और इधर सब वैलिडेट होते हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट फेजेस। सो वेरिफिकेशन स्टेज में सबसे पहले आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इसमें क्लाइंट के साथ बैठ के कंपनी डिसाइड करती है कि क्या क्या उसके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है। एंड इसमें मतलब रिक्वायरमेंट पूरा मतलब प्रोजेक्ट मतलब पूरा समझा जाता है कि कैसे प्रोजेक्ट बनाना है और कैसे सब होता है। बाद में आता है सिस्टम डिजाइन। लेट मी एक्सप्लेन यू विथ गिविंग एन एग्जांपल। देखो हम एक घर बना रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो सिस्टम डिजाइन मतलब पूरे घर का बाहर का आउटर स्ट्रक्चर की डिजाइन जो होगी वो सिस्टम डिजाइन में आएगी। मींस हाउ वी आर गोइंग टू implement the design on the outer structure. Then we have architecture design. In architecture design we are going to implement and design on every rooms of, or we can say in every floor of our building. Means architecture design means first floor, second floor and they have different designs. और उसके बाद आता है मॉड्यूल डिजाइनिंग। मॉड्यूल डिजाइनिंग मतलब अब हमने एक फ्लोर को डिजाइन दे दिया, उसमें हम अलग अलग रूम का डिजाइन देने के लिए हम बोल सकते हैं मॉड्यूल डिजाइनिंग। मतलब पूरे प्रोजेक्ट इस पार्ट में डिवाइड होता है। सिस्टम डिजाइन मतलब पूरा एक प्रोजेक्ट का आउटर होगा उसको हम डिजाइन देंगे। उसके बाद आर्किटेक्चर डिजाइन में अब जो सब मॉड्यूल होंगे उसको हम डिजाइन करेंगे। और मॉड्यूल डिजाइन मतलब छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट के पार्ट होते हैं वो सब इसमें मॉड्यूल डिजाइन में डिजाइन होगा। और ये सब पैरेलल काम करते हैं। इसमें यूनिट टेस्टिंग मतलब जो हमें मॉड्यूल डिजाइन में हमने जो चीज डेवलप की है वो यूनिट टेस्टिंग में टेस्ट होने जाएगी। इंटीग्रेशन में हमने जो आर्किटेक्चर डिजाइन मतलब जो हमारा फ्लोर का मैंने एग्जांपल दिया तो एक फ्लोर हमने डिजाइन किया तो उसका वैलिडेशन इंटीग्रेशन मॉडल में होगा। और पूरी सिस्टम जो हमने डिजाइन की है वो प्रॉपर बन जाएगी तब बाद में वो सिस्टम को इधर टेस्ट करेंगे। एंड फाइनली एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब क्लाइंट के पास पूरा हमारा प्रोजेक्ट जो बना है वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्लाइंट के पास टेस्ट होने जाएगा कि उसको जो चाहिए था वो सब हमने मतलब पूरा एज नीड जो है वो ऐसा बना है कि नहीं। Now let's talk about advantages and disadvantages of V model. So first is time saving. It is a time saving model because इसमें हमने requirement analysis और acceptance testing में मैंने आपको सब समझाया कि सब पैरेलल काम करते हैं। इससे वजह से हमारा आधा टाइम जो बच जाता है। बाद then second one is good understanding at beginning. We have discussed that in requirement analysis we discussed the whole requirement of project with our client. So we have good understanding at the beginning that how we are going to make our project.
एंड थर्ड इज कंपोनेंट मस्ट बी टेस्टेबल. मतलब इधर हमने देखा है मॉड्यूल डिजाइन में स्मॉल यूनिट्स आर गोइंग टू बी डिजाइंड हियर एंड आर गोइंग टू बी टेस्टेड एट यूनिट टेस्टिंग. सो स्मॉल कंपोनेंट्स ऑफ आवर प्रोजेक्ट विल बी टेस्टेबल बिकॉज हमने इधर मॉड्यूल डिजाइन में छोटे छोटे पार्ट्स जो है वो प्रोग्राम किए हैं. एंड फोर्थ इज प्रोग्रेस कैन बी ट्रैक इजीली एज वी आर गोइंग टू वर्क अकॉर्डिंग टू दिस वेरिफिकेशन एनालिसिस. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिजाइन मॉड्यूल, देन वी आर गोइंग टू डिजाइन आर्किटेक्चर एंड फाइनल वी आर गोइंग टू डिजाइन सिस्टम डिजाइन. मीन्स ये सब लाइन वाइज में हम डिजाइन करते हैं तो पूरा प्रोग्रेस ट्रैक होता है कि कौन कैसे काम करे और पूरी टीम ऐसे वर्क कर सकती है. देन फिफ्थ इज प्रोएक्टिव डिफेक्ट ट्रैकिंग. मतलब पहले से ही हमने बात की कि ये पैरेलली काम करता है तो ऐसा साथ में जब वर्क होगा तो हमें पहले से ही सब पता होता है तो वो हम बोल सकते हैं कि वो प्रोएक्टिव डिफेक्ट ट्रैकिंग है. लेट्स टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस. So first is no feedback. We are not going to get any feedback because after once the client has given us the requirement, then we are going to work on our own on system design, architecture design, and module design. So we are finally going to give them at accepted testing. Till that the project is with us. So there is no feedback in mid. Second is less scope of changes because there we are not going to get any feedback from the client. So we will not get any scope of changes. Third is risk analysis is not done. As we have discussed that there is no feedback, so we would not be able to get any risk analysis. We are going to work on our own way. And fourth is not good for big project. And fifth is less flexible. मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें कैसे होता है कि ये बड़े प्रोजेक्ट के लिए नहीं होता क्योंकि इसमें हमें बहुत बड़ी स्किल्ड वर्क टीम चाहिए और वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट में पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये नहीं है. Now let's talk about applications. The first application is software development life cycle. It's used to illustrate that relationship between each phase of the software development process emphasizes the testing phase importance at every step, as we have discussed here, and ensuring each development phase has corresponding testing and validation phase. Now let's talk about second application, validation and verification test. The V model ensures that during the development life cycle, there's clear process for verifying and validating products at each step, as we have discussed before. They are thereby reduce error and ensuring the final product meets the intended requirements in a given time slot. And third is clarity in requirements. So by mapping each development stage to a testing phase, the VMAP stresses the importance of clearly defined and documented requirements, facilitating better communication between stakeholder and client. Thank you. Hello everyone. My next project is RUP model. RUP model, it is a rational unified process model. It is a software development process for these object-oriented models. It is also known as unified process model. It is designed by the UML. UML is Unified Modeling Language. Now we see the characteristics of this model. The characteristics are first, user case driven, iterative, incremental by nature, and delivered online using web technology. Now we see the phases of this model. The phases are four phases, major four phases are there: inception, elaboration, construction, and transition. As we see in the diagram, the first phase is inception. In this phase, the requirements of the clients have been identified by the company. The planning of the whole project was been done in this phase, and the communication between the company and the client are majorly done in this phase. Risk identification also done in the inception phase. The second phase is elaboration phase. Elaboration phase, we elaborate the things which have been defined in the first phase, inception phase, and we redefine if needed them. And if needed, the company will also cancel the model, cancel the project as it has been not been sufficient for the company to cost it. Third phase is construction phase. In construction phase, the project has been constructed by the company or developed by the company, and the testing will be done by the company in this phase, and the coding part will be done in this phase, construction phase. And the last phase is transition phase. In transition phase, the project will be transit from a developed environment to production environment. In this phase, the project will be hand over to the client, and the beta testing will be done by the client in this phase also. And then the new updates will be done in this phase also from the feedback of the customers. Now we see the advantages of this project model. It is a flexible, adaptive,
phased approaches. Collaboration and communication is done in this process, model approach also. Reduce the development cost as well. Now we see the disadvantages. It is a complex, documented overhead and tool dependencies there also. Now we see the applications. Applications is automotive industry projects have been done by this model. Government projects have been done by this model. Finance service industry and educational service industry models are also been developed by using this model also, this model approach. And that is all for this project. Thank you. This is our second model is a Kanban model. बेसिकली कैनबेन मॉडल है, उस कैनबेन का मतलब होता है विजुअलाइजेशन करना, और ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले जो मॉडल है वो सबसे पहले टोयोटा कंपनी ने जापान में यूज़ किया था 1990 में। कैनबेन मॉडल जो है उसमें इस प्रकार का कुछ डायग्राम होता है। सबसे पहले जो प्रोडक्ट होता है वो इन प्रोग्रेस डेवलपमेंट सेक्शन में होता है। प्रोग्रेस के बाद इधर इन प्रोग्रेस और डन के सब सेक्शन होते हैं सभी डिपार्टमेंट में। डेवलपमेंट, उसके बाद आता है टेस्टिंग, फिर डिप्लॉयमेंट और डन। अगर कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव होता है तो उसको बैकलॉग सेक्शन में डाल दिया जाता है और फिर उसके आगे फिर वही प्रोसेस दोहराया जाता है। अब इसमें एडवांटेजेस ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, इम्प्रूवमेंट ज़्यादा आता है इस मॉडल में, कोलैबोरेशन अच्छा होता है, स्मूथर वर्कफ्लो आता है, देन आफ्टर एम्प्लॉय एम्पावरमेंट रहता है ज़्यादा। डिसएडवांटेज, नो टाइम फ्रेम, पॉसिबल डिलेज इन एवरी phases and easy to misinterpret. The application of these models are useful in task management, used in a software development life cycles, and useful in bug tracking and resolutions, and useful manufacturing section to control inventories. Basically जो मॉडल है वो एक फ्रेमवर्क है अजाइल प्रोसेस मॉडल का, और ये सब इसका डायग्राम, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन एप्लीकेशन, दैट्स ऑल। Second one model is waterfall model. Waterfall model was the first model which is introduced in 1917 by Winston Royce. It is referred as a linear sequential life cycle. It is also simple and easy to understand and use. The waterfall model has the earliest SDLC approach that was used for software development. This model has contained total 6 phases. These all phases are: first one is gathering requirement and analysis, second one is design, third one is implementation, fourth one is testing, fifth one is deployment, and sixth one is maintenance. These all steps always follow in this order and does not allow overlaps. Now we see diagram of waterfall model, and this is the diagram of waterfall model. In this, the first phase is requirement, gathering requirement and analysis requirement. All possible requirement of customer is gathering by developer or captured by developer in these phases, and it is documented in specific document. Now second is system design. Thus requirement specification from first phases are studied in these phases, and system design is prepared. This system design help in specific hardware and system requirement, and it help to define the overall system architecture. Third one is implementation or coding. With the input from system design, the system is first developed in a small program called unit, which are integrated in the next phase. Each unit is developed or test for its functionality, which is referred to as a unit testing. Fourth phase is testing or integration. All that unit developed in the implementation phases are integrated into a system after testing of each unit. Post integration, the entire system is tested for any future features or failures. Now fifth one is deployment. When the functional or non-functional testing is done, the product is deployed in the customer environment or released into market. Now sixth one is maintenance. There are some issues which come up in the client environment. To fix those issues, patches are released. Also, to enhance the product, some better version are released. Maintenance is done to deliver these changes in the customer environment. Now advantages of waterfall model. First one, simple and easy. This model is very simple and easy to understand and learn. Second one, clearly defined stages. In this model, all stages are clearly defined. Third one, easy to arrange tasks. This model is very
this model is useful to arrange the task properly. Now, fourth one is process and result are well documented. In this model, process and document are documented in specific documentation. Now, disadvantage of waterfall model: high risk and uncertainty. This model contains high amount of risk and uncertainty. Second one, not good model for complex and OOPC project. This model is not good for complex and object-oriented based project. Fourth one is poor model. This model is very poor for long and ongoing project. Now, fourth one is cannot changing requirement. We cannot changing requirement in this model. Now, application of waterfall model. First one is medical application. In the development of software for critical medical devices or healthcare system, a waterfall model is very helpful. Second one is aerospace and defense. In certain defense and aerospace project where the safety critical system demand planning and documentation, the waterfall model is very helpful. Third one, embedded system. In the real-time embedded system where the software is tightly coupled with hardware, the waterfall model is very useful. Now, financial system. In the development of real-time financial system such as stock trading platform or banking software where precision, accuracy and compliance with regulatory standard are critical, the waterfall model is very helpful. Fifth one is telecommunication. The waterfall model might be considered in the development of real-time communication system where a structured approach is required to ensure the reliability and accuracy of the software. In this, the waterfall model is very helpful. Thank you very much. My second model is the iterative model. So the iterative model is a one type of software development life cycle model that is the initial and basic implementation, adds more graduality, and that are the steps of the iterative model. Planning and requirement, मतलब में जो आपका मॉडल होगा उसके पहले प्लानिंग करनी होगी और जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ फुलफिल होगी, फिर उसके बाद एनालिसिस, मतलब जो भी प्रोडक्ट तैयार किया उसकी एनालिसिस होगी और उसकी डिजाइन इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद प्रोडक्ट का इम्प्लीमेंटेशन होगा और प्रोडक्ट बन जाने के बाद उसकी क्वालिटी की फिर टेस्ट होगी और आखिर में उसका रिव्यू और इवोल्यूशन होगा. That are the advantages of the iterative model. So the parallel development and the testing and debugging during smaller iteration is easy. मतलब में जो smaller कुछ कम टाइम के लिए उसकी टेस्टिंग जो होगी वो ज्यादा बेनिफिट वाली होगी और बेस्ट, मतलब मैं एजाइल जो मॉडलिंग है उसके लिए इटरेटिव मॉडल एक बेस्ट ऑप्शन है और मोर कॉस्ट इफेक्टिव. मतलब मैं आपको अगर कोई स्कोप का चेंज करना है तो उसके लिए ये कॉस्ट को कम कर देगा. और उसके डिसएडवांटेजेस आते हैं, मोर रिसोर्सेज रिक्वायर, मतलब रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत होती है, टाइम मैनेजमेंट और मैनेजमेंट की ज्यादा जरूरत होती है, हाईली स्किल्स रिसोर्सेज की भी ज्यादा जरूरत होगी और नॉट सुइटेबल फॉर चेंजिंग रिक्वायरमेंट. मतलब मैं आप अगर प्रोडक्ट का कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए ये सुइटेबल नहीं होगा और स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए इटरेटिव मॉडल नहीं है, ये बिगर प्रोजेक्ट के लिए ही है. और दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द इटरेटिव मॉडल. सो द वेब डेवलपमेंट, UI UX डिजाइन, गेम डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये सारे के लिए इटरेटिव मॉडल का यूज होता है. दैट आर द एग्जांपल्स जहां पे इटरेटिव मॉडल का यूज होता है. फिबोनाची नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, कोई भी कैलकुलेटर गेम होती है या लॉन्ग डिवीजन नंबर्स होते हैं, उसके लिए हम इटरेटिव मॉडल का यूज कर सकते हैं. दैट इज द डायग्राम ऑफ इटरेटिव मॉडल. सो द फर्स्ट इज द प्लानिंग एंड देन गोस टू द रिक्वायरमेंट एंड आफ्टर दैट एनालिसिस एंड डिजाइन. मतलब आप प्रोडक्ट का जो एनालिसिस होगा उसके बाद प्रोडक्ट इंप्लीमेंट होगा, वहां से प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होगा, फिर टेस्ट और आखिर में उसका इवोल्यूशन एंड रिव्यू दे सकते हैं.